Okay, sir, we can begin. It's exactly 6:30. सभी का स्वागत है और अतुल भाई मैं आपसे कहूंगा कि आज की कार्रवाई शुरू करें। ओके। रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત યુપી ફેડરેશન, કેરાલા ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન જવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથીના વક્તા દિનાકરણજી, નંદકુમાર રાઉતજી તેમજ સંજય કાંબેકરજી અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું। આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે। કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે। Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કેશવરબેન। શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું। તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। थैंक यू अतुल भाई और सभी का स्वागत है। वक्ताओं में दिनाकरण जी, नंदकुमार जी राउत और संजय कामबेकर जी, आप तीनों का स्वागत है। दिनाकरण जी का एक संक्षिप्त बायोग्राफी से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। 1983 में उन्होंने अडियार में लॉज में ज्वाइन किया एज ए मेंबर। वे सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं। केरला फेडरेशन के सेक्रेटरी 1989 से 1992 और 2010 से 2013 और 16 तक वे रहे हैं और नेशनल लेक्चरर की तरह भी इंडियन सेक्शन को सर्व करते रहे। उन्होंने केरला साहित्य एकेडमी के लिए बुक पब्लिश की जिसका नाम था ब्रह्म विद्या संगमम, जो एक तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी के वापस पूर्ण जागरण के लिए केरल में उन्होंने ये किताब लिखी थी। उसके अलावा उन्होंने राधा बर्नियर की टॉक्स जो है लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ को कंपाइल किया है। सुरेंद्र नारायण की जो टॉक्स हैं लिव योर वर्ल्ड एंड कम इनटू अवर्स, उसको भी उन्होंने किया है कंपाइल। उसके अलावा उन्होंने थियोसॉफिक लाइफ को ट्रांसलेट किया है जो एनिबेसेंट द्वारा लिखी गई है और बहुत सारे आर्टिकल्स उनके थियोसॉफिक्स और जर्नल्स में छप चुके हैं। दिनाकरण जी बहुत एक्टिव है और मैं उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी इसलिए कहता हूँ थियोसॉफी की, क्योंकि आप उनके जितने भी मैसेज में पढ़ेंगे किसी भी दिन शायद सेम बुक रिपीट पूरे महीने भर वो किताबों के बारे में कहते रहते हैं। आइए दिनाकरण जी, आज का विषय शुरू कीजिए। थैंक यू। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निसलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेत् नान्यपन्था विद्यते अयनात् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेत् नान्यपन्था विद्यते अयनात्। Dear brothers and sisters, thank you for inviting me to this Triveni meet. The title of the book which we are going to take up is No Other Path to Go.
It is taken from the Swethaswethara Upanishad. The mantras which I chanted just now is the original Sanskrit slogas from that Upanishad. Its meaning goes like this. Alone within this universe, he comes and goes. It is he who is the fire, the water he pervades. Him and him only knowing, I cross over death. No other path at all is there to go. I know him, the mighty man, radiant like the sun, beyond the darkness. Him and him only knowing, I cross over the death. No other path at all is there to go. The author of the book is very familiar to you, Srimati Radha S. Burnier, 7th International President of the Theosophical Society. She was a scholar of Sanskrit language and well-versed in Upanishads and Sanskrit texts. This year marks the birth centenary of Radhaji, and this presentation is only a humble tribute to her. Many of you knew her maybe get her some personality. lunch, then she has a piano lesson, and then we'll go to the mandir. So that, Okay. Many of you knew her personally like me. She was the president of the Theosophical Society since 1980 till her death in 2013. She served as the General Secretary of the Indian section of the Theosophical Society for 18 years. She was the director of the Adayar Library and Research Center since 1954 to 1980. Arthur H. Nethercott, the famous biographer of Dr. Besant, in his book, records that he met Radhaji. At the time, she was Radha Sriram, was in charge of the. She was the daughter of Brother Sriram, who was the 5th president of the Theosophical Society. Like her father, she was also attracted to Theosophy at a very young age. She was a great lover of Indian classical dance form, Bharatanatyam, and a diploma holder from Kalakshetra, founded by Dr. Rukmini Devi Arundale, was her patron aunt. She was also acted in a lead role in a film named The River, directed by Jean Renoir in 1951. The Nagarjuna University conferred D. Litt to her in 1984. She was an author, orator, organizer, and above all, a lover of humanity. During the presidency, she started an animal welfare center at Adayar and started a mobile dispensary to meet the needs of the villagers around Chennai. She also patronized movements like New Life for India movement. She was the editor of their magazine, Wake Up India, till her death. She also promoted movements like Beauty Without Cruelty, which is based on at Pune, which many of you may know. As an author, her books contain the pearls of wisdom. No other path is also not an exception. The book contains 9 articles on leading a spiritual life by self-purification and self-observation. The common thread we can find in all these articles is Atma Jnana, or self-knowledge. The opening article, The Spiritual Life, tells us in detail what is real spiritual life. Each person who is interested in the spiritual life should find out the word spiritual corresponds to something which exists within himself, or whether it is merely a word used by others, and therefore, so far as he is concerned, has knowledge. For most of us, the word spiritual is like the word God, a word which can cover numerous contradictions and illusions, a word which we can interpret according to our hidden wishes and inclinations. Dadaji comments, a frustrated and a disappointed person, unsuccessful in his ventures, turns for relief to the so-called spiritual. If he had been successful in his material pursuit, he would not have sought the other way.
his seeming desire for leading a spiritual life is only a mere escape from, only a longed for change from earthly experiences. On the other hand, there are millions from every religious community set apart a time for doing the religious activities like puja, bhajans, prayers, etc., without giving any particular attention to its inner meaning. This is the result of their upbringing and conditioning. They are only conforming to what is easiest and doing what is expected of them. The so-called spiritual pursuit can be an insurance against possible unpleasantness hereafter, in which case it is an expression of latent fear. It is like an investment of a businessman. Each one of us who wishes to lead the spiritual life must test himself and examine his motives. He should examine himself whether he really wants to lead a spiritual life, not deluded by illusions. When the search for the spiritual is unreal, only a part of the person's life is given to it. This part is only on the surface, and then he acts on the superficial level, is concerned only with outward activities which he likes to call spiritual. Or he may devote a small compartment of his life to certain practices, the rest of it being given over to the totally different pursuits of the world. In short, the search for the spiritual must not be a compartmental but wholehearted, not personal self-seeking, but a non-personal yet eager quest. Radhaji quotes at the feet of the master and emphasizes the need of an important qualification in spiritual life, love. Buddha's life is an inspiring example of the resolve to find illumination springing from compassion for the lot of man. After seeing the miseries of the world, Buddha sought the light which alone would bring it freedom. So, the resolve to find spiritual light must start with a deep concern for the others and a genuine desire for the good of all. Worldly life does not consist of physical or mental contact with material things, but an attitude of possession. There is a great difference between the relationship we have with objects, persons, ideas, when there is the urge for possession and where there is not. A possessive relationship is not a real one. The greed for possession and acquisition must be entirely eradicated if you are to journey from the worldly to spiritual. The second chapter is on stages on the path. The opening sentence of the chapter is worth pondering. It is important to grasp not merely as a concept, but as a fact that path is oneself. She quotes the voice of the silence and states that one cannot travel on the path until one has become the path. The path is the qualitative change which takes place in one's consciousness and in the vehicles through which consciousness functions. The word path gives a wrong picture, as if one were going somewhere outside oneself. But it is meant to indicate an inner change and nothing else. Here we must recall the statement of Jiddu Krishnamurti, truth is a pathless land. Before the inner change takes place consciously, there must have been not only some discrimination, but also a little detachment, a certain self-restraint implied in the 6 points of conduct mentioned in Vedanta and in other similar texts of other religious traditions. Moreover, there must be an urge to change, feeling that there must be right about turn in life. The most difficult stage of one's life is this turning point. Both doubt and certainty are fetters on the path. Radhaji had close association with J. Krishnamurti. In her writings, she quotes Krishnaji. The programs of the International Convention Adayar were arranged in such a way that delegates may be able to attend Krishnamurti's talk at Vasanta Vihar. You can see her sitting in front row to listen to Krishnaji. Regarding Krishnaji's choiceless awareness, Radha Burnier says that it is very simple to understand that for a person who has turned towards the spiritual heights, there is only one direction, not many, and therefore no choice. On initiation, Radhaji says, it is a much misunderstood and degraded word. Actions like a guru putting his finger on someone's forehead
and this is said to be initiation. In fact, it is superstition. Initiation is not an outer event at all. The factors lie within. When preparation has taken place, there is an inward transformation. The consciousness undergoes a dimensional change, and this cannot be brought about by someone else any more than someone else can see on behalf of a blind person. The word Shishya means who is capable and worthy of being taught. Most of their secrets are incommunicable, says one of the masters of wisdom. If this were not so, wisdom could be passed on by publishing a textbook and distributing it to the world. Initiation means entering a new world and beginning to live at a different level. Then she explains various grades of consciousness. The finest stage of dimension for the human being is that of liberation, the freedom that is the utter abolition of the ego. On the way to that state, self-centeredness and self-importance have to diminish. Even yearning for liberation can be a form of ambition. There is a difference between the Buddhic consciousness and the Nirvanic. The Buddhic consciousness is a wonderful feeling of unity with everything, the grass, sand, animals, human being, even with what before seemed disgusting or painful. There is oneness with the suffering of those who suffer and with the joy of those who are happy. But in the Nirvanic consciousness, there is no trace of the feeling that I am one with the other. There is undivided unity, deep and steady. The Arhat is the embodiment and essence of compassion. When we see suffering, we either suffer with the sufferer or we are indifferent. But to understand the meaning of suffering, to feel compassion and not be agitated is different. Thus the Buddha and Arhats, while they are immeasurably compassionate, have the perfect peace that passes understanding. Third chapter of the book is the path of wisdom. The word philosophy means love of wisdom. Love of wisdom is a serious investigation into the depths of existence. Theosophy means divine wisdom. Wisdom such as that possessed by the gods. Let me be safe. It is God wisdom, clarifying all relationships and bringing one to the very heart of existence. Theosophy is not a new code of concepts regarding the universe, man and the universe. Theosophy is not a new code of concepts regarding universe, man and the ultimate. Most people are interested only in their personal life, but those who are real students of Theosophy are earnestly and constantly engaged in trying to understand what life as a whole really signifies. She remains all of us. The desire to know, arising from self-interested motives, is not really philosophy or theosophy, which is a serious inquiry into the basic questions of life, not into the superficial, peripheral, or unessential ones. The inquiry which brings one closer to truth also provides the wisdom to live the right kind of life. Inquiry must take place in the heart. Everything in this world is subject to change. She quotes the great poet Shirley James. In the present world, every one of us should ponder over these words of the poet. It goes like this. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crooked skith and spade. She also quotes from another famous poet, H.W. Longfellow, and says, lives of great men all remained us. We can make our lives sublime. And departing, leave behind us footprints on the sands of time. The question is there a changeless substratum on the screen of which these changes take place? Suppose we study the answers given by different philosophers. Do we really become philosophers? Certainly not. There is true love of wisdom only in a person who himself ponders deeply over these and other aspects of existence. Bhagavad Gita speaks the state of Sthita Prajna,
or stable-minded. He is never disturbed, agitated, or troubled by slander or accusations. It is possible to remain undisturbed, agitated, or troubled by slander and accusations. We often mistake the feeling of sentimentality, of emotionalism, for the answer of the heart. But that is not meant by the heart. By heart, we must understand buddhi, or the higher perception. But the light, the truth, the good is found in the depth of ourselves. Our actions and relationships become transformed. The things that once disturbed us cease to matter and fade into the background. Radhaji points out. In the 4th chapter, no other path to go, she says. Membership of the Theosophical Society becomes significant only if one has the courage to live differently, not according to accepted norms, because many accepted norms are immoral and unethical. The accepted norms are to look down at the poor, lower caste, and other marginalized communities. But a member of the Theosophical Society must cease to think of others in terms of nation, caste, race, social position, or wealth, and look at every human being as a human being. As Gita points out, samatvam yoga muchyate, which means to look upon everybody with an equal eye. She quotes J. Krishnamurti and says, you must learn not to compare. Out of comparison comes the notion of iniquity, judgment. Comparison are the activities of the lower mind. Judge not that you be not judged. Gita in a different language says, samatvam yoga muchyate. In order to be real theosophists, we must live intelligently, look objectively at ourselves, see how our thoughts work and in what way they contradict the fundamental principles of theosophy. That principle is brotherhood and implies learning to recognize the immortal and implies learning to recognize the immortal nature in every person and realizing that it is of greater importance than outer appearance. The secrets of secrets to be discovered in our own hidden nature. When that is known, a new name is heard to resound through creation. To be able to hear that and see the divinity is a secret that theosophy searches for. There is no other path to go. Na anya pantha vidyate ayanaye. First part is over. Thank you. थैंक यू सो मच दिनाकरण जी और राउत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई विल गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ राउत जी नंद कुमार राउत जी ने इंजीनियरिंग किया है पुणे से भी सिविल हैं वो इंजीनियरिंग में और उन्होंने 1982 में ये डिग्री प्राप्त की 1983 से 2015 तक अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर के तौर पर उन्होंने सेवा दी और 2015 में रिटायर हुए 1 दिसंबर 1997 को वो थियोसॉफिकल के सदस्य बने 2008 से 16 तक अकोला लॉल के ट्रेजरर रहे सन 2016 से 2019 तक उन्होंने अकोला लॉज के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी और सितंबर 2016 से लेकर 2019 तक मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी अध्यक्ष के तौर पर रहे 2019 से वे लगातार नेशनल लेक्चरर बने हुए हैं इंडियन सेक्शन के और थियोसॉफी की सेवा कर रहे हैं त्रिवेणी में भी वे लगातार आते हैं आइए राउत साहब आपका स्वागत है थैंक यू नमस्ते आप मराठी में आज का संबोधन करेंगे हाँ यस थैंक यू दिनकरन जी आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया सर्वांना नमस्कार दिनकरन सरांचं जे आज इंग्लिश मध्ये जे पहिला पार्टचं त्यांनी जे डिस्कशन केलं ते छान होतं आणि त्याचाच मराठीमध्ये अनुवाद मी करत आहे या विश्वात तो एकटाच येतो आणि जातो तोच जो अग्नी आहे पाणी तोच व्यापतो त्याला आणि त्यालाच जाणून मी मृत्यूला ओलांडतो जाण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नाही मी त्याला ओळखतो पराक्रमी मनुष्य सूर्यासारखा तेजस्वी अंधाराच्या पलीकडील
त्याला आणि त्यालाच जाणून मी मृत्यूला पार करतो आणि जाण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नाही. नो अदर पार्ट टू गो, हे राधाजींच्या एक त्यांचं पुस्तक आहे, त्याचं शीर्षक आहे. आणि हे शीर्षक श्वेताश्वेतोपर उपनिषदामधून घेतलेलं आहे. पण त्याचा अर्थ जाण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नाही. या पुस्तकाच्या लेखिका श्रीमती राधा बर्नियर ह्या असून संस्कृतच्या त्या विद्वान आणि उपनिषद आणि संस्कृत मध्ये पारंगत होत्या. यावर्षी त्यांची जन्मशताब्दी आहे आणि म्हणून त्यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजली देण्यासाठी या विषयावर सादरीकरण करायचे आहे. आपणापैकी बरेच जण त्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखतात. सन 1980 पासून सन 2013 पर्यंत त्या थिओसॉफिकल सोसायटीच्या आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षा होत्या. सुमारे 18 वर्षेपर्यंत इंडियन सेक्शनच्या सरचिटणीस म्हणून त्यांनी काम केले. सन 1954 ते 1980 पर्यंत त्या अड्यार येथील ग्रंथालयाच्या संचालक सुद्धा होत्या. ऑर्थर एक नेदरकोट यांनी त्यांच्या डॉक्टर एनिबेसंट वर लिहिलेल्या पुस्तकात उल्लेख केला की त्यांनी अड्यार येथील आर्काइव्ज मध्ये राधाजींची भेट घेतली. त्यावेळी त्या आर्काइव्हच्या प्रमुख होत्या. त्यांनी ब्युटी विदाउट क्रुएल्टी सारख्या चळवळींचे समर्थन केले आणि सदस्यांना पर्यावरणपूर्वक जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी न्यू लाईफ फॉर इंडिया मुवमेंट फॉर राईट सिटीजनशिप हे सुद्धा सुरू केले. त्यांनी 2013 मध्ये त्यांच्या निर्वाणापर्यंत संपादक असलेल्या चळवळींच्या त्या आदर्शांना चालना देण्यासाठी वेकअप इंडिया नावाने ओळखले जाणारे त्रैमासिक सुद्धा सुरू केले. एक लेखिका म्हणून त्यांच्या पुस्तकांमध्ये शहाणपणाचे मोती म्हणजे पर्ल्स ऑफ विजडम आहे आणि नो अदर पार्ट टू गो देखील त्याला अपवाद नाही. प्रत्येक धार्मिक पुस्तकात समुदायातील लाखो लोक त्यांच्या आतील अर्थाकडे विशेष लक्ष न देता पूजा, भजन, प्रार्थना इत्यादी त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी वेळ निश्चित करतात. हे त्यांच्यावर झालेले संगोपन आणि त्यांचं कंडिशनिंग म्हणजे बंधन याचा परिणाम आहे. ते फक्त सर्वात सोप्या गोष्टींचे पालन करत आणि त्यांच्याकडून जे अपेक्षित आहे ते करत. तथाकथित आध्यात्मिक साधना हा नंतरच्या संभाव्य अप्रियते विरुद्ध एक बाब असू शकते, ज्या बाबतीत ते सुप्त पराक्रमाची अभिव्यक्ती आहे. ते एखाद्या व्यावसायिकाच्या गुंतवणुकीसारखे आहे. आध्यात्मिक जीवन जगू इच्छिणाऱ्या आपल्यापैकी प्रत्येकाने स्वतःची परीक्षा घेतली पाहिजे आणि त्याच्या हेतूचे परीक्षण केले पाहिजे. राधाजी ऍट द फीट ऑफ मास्टर या पुस्तकांचा उल्लेख करून सांगतात की आध्यात्मिक जीवनातील प्रेमाच्या महत्वाच्या पात्रतेबरोबर त्याच्या पात्रतेवर त्याच्या गरजेवर भर देतात. बुद्ध जीवन हे माणसाच्या दयाळूपणातून प्रकाश मिळवण्याच्या संकल्पाचे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे. जगाची दुःखे ते पाहिल्यानंतर बुद्धाने प्रकाश शोधला जो एकटाच त्याला स्वातंत्र्य देतो. म्हणून आध्यात्मिक प्रकाश शोधण्याचा संकल्प इतरांबद्दल खोल चिंतेने आणि सर्वांच्या भल्यासाठी खऱ्या इच्छेने सुरू झाला पाहिजे. अध्याय 2 मध्ये त्या म्हणतात की पथावरील पायऱ्या आहेत म्हणजे स्टेजेस ऑन द स्टेप्स यावर आहे. अध्यायाचे सुरुवातीचे वाक्य विचार करण्यासारखे केवळ संकल्पना म्हणून नव्हे तर समजून घेणे महत्वाचे आहे. पण वास्तविक पाहता मार्ग स्वतःच आहे. राधाजी व्हॉइस ऑफ सायलेन्सचा उल्लेख करून म्हणतात की जोपर्यंत मार्ग बनत नाही, तयार होत नाही, तोपर्यंत कोणीही त्या मार्गावर प्रवास करू शकत.
मार्ग हा गुणात्मक बदल आहे आणि तो एखाद्या चेतनेमध्ये म्हणजे कॉन्शियसनेस मध्ये आणि इतर शरीरे, इतर व्हेइकल्स ज्यामधून चेतना कार्य करते त्यामधून ते राहते. जग हे मार्गाचे चुकीची चित्र कल्पना करतात. म्हणजे जगातील लोक पाथ किंवा मार्ग याचं चुकीचं चित्र उभं करतात. जसे की एखादी व्यक्ती स्वतः बाहेर कुठेतरी जात आहे, मार्ग आहे म्हणजे खरोखरचा रस्ता आहे असं त्यांना वाटतं, परंतु ते दुसरे तिसरं काहीही नसून आंतरिक बदल दर्शवण्यासाठी आहे. या ठिकाणी आपण जे कृष्णमूर्ती यांचे विधान सत्य एक मार्गहीन भूमी आहे म्हणजे ट्रूथ इज ए पाथलेस लँड हे आपण आठवले पाहिजे. ट्रूथ इज ए पाथलेस लँड हे कृष्णमूर्तींचे वाक्य आपण नेहमी आठवले पाहिजे. राधाजींचा जे कृष्णमूर्ती यांच्याशी जवळचा संपर्क होता, त्यांच्या लेखनात त्यांनी कृष्णमूर्तींचा उल्लेख केला. आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन अड्यारचे कार्यक्रम अशा प्रकारे आयोजित केले होते की वसंत विहार येथे कृष्णमूर्ती यांच्या भाषणाला प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील. कृष्णमूर्तींना ऐकण्यासाठी त्यांना पुढच्या रांगेत बसवलेले आपण पाहू शकतो. कृष्णमूर्तींच्या चॉईसलेस अवेअरनेस बद्दल सुद्धा राधा बर्नियर म्हणतात की आध्यात्मिक उच्चतेकडे वळलेल्या व्यक्तीसाठी फक्त एकच दिशा असते आणि त्यामुळे पर्याय नसतो. आणि हे समजणे खूप सोपे आहे. दीक्षा घेतल्यावर राधाजी म्हणतात की हा खूप गैरसमज आहे आणि हा अपमानित शब्द आहे. गुरु एखाद्याच्या कपाळावर बोट ठेवण्यासारख्या कृती करतात आणि यालाच आपण दीक्षा म्हणतो. किंबहुना ती अंधश्रद्धा आहे. दीक्षा ही काही बाह्य घटना नाही आहे. घटक आतमध्ये दडलेले असते. जेव्हा तयारी होते तेव्हा अंतर्बाह्य परिवर्तन होते. आपल्याला चेतनेमध्ये एक आकारमानात्मक बदल होतो आणि हे अंध व्यक्तीच्या वतीने कोणीतरी पाहू शकत नाही, त्यापेक्षा जास्त कोणीतरी आणू शकत नाही. स्वार्थी हेतून या जगातील प्रत्येक गोष्ट बदलाच्या अधीन आहे. राधाजी महान कवी शर्ली जेम्स यांचा उल्लेख करतात आणि सध्याच्या जगात आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कवींच्या खालील शब्दावर चिंतन केले पाहिजे. आपल्या रक्ताचे आणि राज्याचे वैभव सावले आहेत. महत्वाच्या गोष्टी नाहीत. राजदंड आणि मुकुट खाली कोसळला पाहिजे आणि धूळमध्ये सामान केले पाहिजे. गरीब, कुटील, कातळ आणि कुदळ ही त्यांची कविता आहे. राधाजींनी आणखीन एक प्रसिद्ध कवी H.W. लॉन्गफेलो यांच्या शब्दांचा सुद्धा उल्लेख केला. महापुरुषांचे जीवन आपल्याला आठवण करून देतात. आपण आपले जीवन उदात्त करू शकतो आणि निघताना आपल्या मागे सोडा काळाच्या वाळूवर पायाचे ठसे. मनाच्या उत्तरासाठी आपण अनेकदा भावनिकतेची भावना चुकतो, पण ते हृदयद्वारे अभिप्रेत नाही. हृदयद्वारे आपण बुद्ध किंवा उच्च धारणा समजून घेतली पाहिजे. जेव्हा प्रकाश, सत्य, चांगुलपणा स्वतः खोलात सापडतो तेव्हा आपल्या कृती आणि नाते संबंधात बदलतात. ज्या गोष्टी एकेकाळी आपल्याला त्रास देत होत्या त्या महत्वाच्या राहून जातात आणि पार्श्वभूमीत त्या मिटून जातात. चौथ्या अध्यायात, या पुस्तकाच्या चौथ्या अध्यायात जाण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही मध्ये त्या म्हणतात, राजाजी म्हणतात, थिओसॉफिकल सोसायटीचे सदस्यत्व तेव्हाच महत्वपूर्ण ठरते जेव्हा एखाद्या व्यक्तींमध्ये स्वीकारलेल्या नियमांनुसार नव्हे तर वेगळ्या पद्धतीने जगण्याचे धैर्य असेल. कारण अनेक स्वीकृत मानदंड अनैतिक आहेत. गरीब, खालच्या आणि इतर उपेक्षित समुदायांना तुच्छतेने पाहणे हे स्वीकृत नियम आहेत. परंतु थिओसॉफिकल सोसायटीच्या सदस्याने राष्ट्र, जात,
वंश, सामाजिक स्थान किंवा संपत्ती या संदर्भात इतरांचा विचार करणे बंद केले पाहिजे आणि प्रत्येक मानवाकडे माणूस म्हणून बघावे. वास्तविक थिओसॉफिस्ट होण्यासाठी आपण हुशारीने जगले पाहिजे. स्वतःकडे वस्तुनिष्ठपणे बघितले पाहिजे. आपले विचार कसे कार्य करतात आणि ते थिओसॉफीच्या मूलभूत तत्वांना कशा प्रकारे विरोध करतात ते बघा. ते तत्व म्हणजे बंधुत्व आणि अमरत्व ओळखायला शिकणे आणि प्रत्येक व्यक्तींमधील अमर स्वभाव ओळखणे आणि बाह्य स्वरूपापेक्षा त्याचे महत्व अधिक हे ते सूचित करते. आपल्या स्वतःच्या लपलेल्या स्वभावात हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सृष्टीतून नवीन नाव ऐकू येते, ते ऐकण्यास आणि ते देवत्व पाहण्यास सक्षम होण्यासाठी थिओसॉफिस्ट शोधत असलेलं हे एक रहस्य आहे. आजचा पहिला पाठ संपलेला आहे. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं संजय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ. 1 मिनट. संजय जी वेलकम. यस सर. जी जी, 1 सेकंड. संजय जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. वे 34 ईयर्स से प्रोफेशनल है. मल्टी डोमेन एक्सपीरियंस है उन्हें. सेल्स, सर्विसेज, मेंटेनेंस, कॉर्पोरेट HR, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इत्यादि कई अलग अलग माध्यमों में उन्होंने काम किया है. और अभी वो एक प्रिस्म जॉनसन लिमिटेड के सीमेंट डिवीजन में सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं. बेस जो कि वाराणसी में, जहाँ हमारा इंडियन हेडक्वार्टर भी है, वहीं पर आपसे मुलाकात भी हुई थी. और वहाँ पर वो HR के हेड की तरह है, मार्केटिंग है, और उनका डेजिग्नेशन है जनरल मैनेजर HR. लाइफ मेंबर है वो इंडियन सोसाइटी के, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अक्सर काम करते रहते हैं. मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और काशी तत्व सभा वाराणसी में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग करते हैं. वे माइनिंग इंजीनियर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी लाइफ मेंबर हैं, और पैनल मेंबर हैं एक ऑटोनोमस ए ग्रेड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के, और पोस्ट ग्रेजुएट MBA स्टूडेंट को भी उन्होंने गाइड किया हुआ है, और सक्सेसफुली कैट एग्जामिनेशन में भी वो हैं. वे NGO के मेंटर भी हैं, और बहुत सारी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में उनका योगदान रहता है. वे इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वन ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो कि अपने स्टूडेंट्स को वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि APS यूनिवर्सिटी रीवा, SIM पटना, MIT यूनिवर्सिटी पटना, रांची, RSM वाराणसी, SMS वाराणसी, यूनिवर्सिटी. अर्चना जी जरा आम्ही निघालो ना तर निघणारच नव्हतो. कंटाळलो होतो. कौन कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी. तो थोड़ी बीच में अवरोध आ गया. तो वो मैं कह रहा था SMS यूनिवर्सिटी वाराणसी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और VPSB यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं. बहुमुखी प्रतिभा है सर संजय सर आपकी, और आज का आपने ये अल्प समय में जो निवेदन स्वीकार किया उसके लिए बहुत बहुत आभार. और आप हिंदी में अपना पार्ट 1 का धन्यवाद. धन्यवाद तरल मुंशी जी, आपने जो हमें मौका दिया है. मैं पूरा एज इट इज रूपांतर तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जैसे तरल जी से बात किया था कि इतना बड़ा उपनिषद लिखे गए हैं, राधा बर्नियर जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने उसका स्टडी किया है, उसके ऊपर बुक लिखे गए हैं. तो हमारा कर्तव्य है कि संक्षिप्त रूप में, सारांश रूप में उसका जो जीस्ट है, जो मैसेज लोगों के पास जाए और लोग उत्साहित हो जाए कि हम भी थियोसॉफिकल जो आत्मज्ञान है, आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके तरफ हम कैसे जुड़े. तो आज का जो युग है तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो हम बहुत सौभाग्यशाली है हम सभी लोग कि जो हम राधा बर्नियर जी की जो 100वीं जन्म उत्सव है, उसमें उन्होंने लिखे हुए बुक पे चर्चा करने जा रहे हैं. जिस प्रकार नदियां बहती है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर
परे से भी दिव्य पुरुषों को प्राप्त हो जाता है ना। मृत्यु अवश्य होने वाली है, जानकर विद्वान ज्ञान के द्वारा नित्य तेज स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसके सिवा उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है। उसे जान लेकर विद्वान प्रसन्नित हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। राधा बर्नियर जी, इनका जन्म 15 नवंबर 2023 को हुआ था और काफी उन्होंने काम किए हैं अपने मृत्यु तक। राधा बर्नियर जी जो है, नीलकंठ जी जो थे 5वें अध्यक्ष थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उनकी बेटी है और उन्होंने जो है काफी पद संभाले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री की है। 1935 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत यंग एज में, क्योंकि उनके पिता भी जो है थियोसॉफिकल आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे, तो वो काफी भाग्यशाली रही कि उन्होंने भी अपने युवा अवस्था में थियोसॉफी को ज्वाइन किया है और कई वर्षों तक वो युवा वो वयस्क लॉज की अध्यक्ष बनी रही है। मद्रास थियोसॉफिकल फेडरेशन में भी उन्होंने अध्यक्षता का काम किया है। वो लाइब्रेरी की भी मेन कार्यकर्ता थी और उन्होंने काफी सम्मेलनों में और उसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने न्यू लाइफ फॉर इंडिया मूवमेंट स्थापना की थी और उसमें भी उन्होंने काफी आक्रामक तरीके से काम किया था। ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, जो सुन रहे हैं, पहले वक्ता थे जिन्होंने इंग्लिश में ये बातें बताई और हमें पूरा ये पहला पार्ट जो है बताया है। उसके बाद मराठी में भी उसका अध्ययन हुआ है। तो ये जो है बेटा श्वेताश्वेतर उपनिषद से ये पुस्तक का जो पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखा है, नो अदर पार्ट टू गो, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो उन्होंने तो इतने बड़े उपनिषदों को पढ़ के उसके ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक के ऊपर हम और उसको ट्रांसलेट कर रहे बताने के बजाय हम उसमें से मुख्य बिंदुओं की तरफ हम ध्यान देंगे। राधा बर्नर जी जो है ये एक अच्छी नृत्यांगना थी जो भारतीय क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, उन्होंने अपनी बुआ से इसको सीखा था और रुक्मिणी देवी उनका नाम है। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया है, द रिवर नाम की, जो जिसको हम नदी बोलते हैं हिंदी में, उसमें उन्होंने काम किया था। जिन नेरियर इन्होंने 1958 में उसके डायरेक्ट किया था। नागार्जुन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डी लीड की पदवी भी उपाधि भी दी थी। शी वॉज लाइक लेखिका, व्याख्याता, व्यवस्था करने वाली सम्मानित व्यक्ति। काफी चीजों में उन्होंने अपने रोल निभाए हैं और उस रोल का जो फायदा हमें मिला है कि उनका जो राइटअप है, उन्होंने जो चीजें लिखी है, आज हम उसको पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ के हम अपने मार्ग के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक जागो इंडिया, लाइक वेकअप इंडिया करके एक मूवमेंट भी चलाया था उन्होंने और काफी दिन तक वो एक संपादका भी रही है। अभी हम जो इस बुक के बारे में या जो हमारे आज पार्ट है, टोटल 2 पार्ट में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 9 चैप्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि पहला चैप्टर है, उसमें हमें मौका मिलता है समझने का कि हम कौन हैं। एक कॉमन थ्रेड जो है, धागा पता चलेगा हमको बार बार इसमें, आत्मा और सेल्फ नॉलेज। हम कौन हैं, हमें क्या करना है। हम एक आत्मा है और हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने पहले अपने बारे में जाना कि नहीं है। पूरी दुनिया को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हमने अपने आप को जानने की कोशिश की है और उसके किस तरह से अपने आप को जानना चाहिए। हम रियल जो है, सत्य जो है, स्पिरिचुअल की तरफ जाए और हम उस रास्ते पे निकले तो हम अपने आप को क्या जान सकते हैं। क्या हम शुद्ध है, हम प्योर है, हमारी जो सोच है वो रियल है, अनरियल है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे हताश, विफलता, आशा अनुरूप जो परिणाम होते नहीं हैं, ऐसे काफी लोग होते हैं
तो ये लोग क्या करते हैं, आध्यात्म की ओर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक मार्ग मिले। तो ये एक प्रकार का हमें लगता है कि ये एक एस्केप है इससे निकलने का। और जिस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ रहता है उस तरह से फिर हम भजन कीर्तन संगीत ऐसे करके भगवान की भक्ति करते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हो गए, हमको आध्यात्मिकता आ रही है। लेकिन मुख्य बिंदु चैप्टर 1 में ये है कि हमें अपने खुद का आत्मा जो है, हमें अपने आप को समझना है। और सेल्फ को जो हम समझ लेंगे तो हम सभी चीजों से जो है परे हो जाएंगे। हम अपने लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट करके रखते हैं और जो उस कंपार्टमेंट में हम जीते रहते हैं। तो हमें उन सब चीजों से बाहर निकल कर जो है हमें बाहर निकलना है और अपने आत्मा को जो है जानना है। राधा जी जो है फीट ऑफ द मास्टर, जो उनका एक ये था, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ अ लव, इसके बारे में प्रेम और करुणा के बारे में उन्होंने काफी बातें की है इसमें। और जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई चीजें हासिल होनी चाहिए, हम काबिज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पैसा है, शोहरत है, मेटेरियलिस्टिक वस्तुएं है, ये सब हम पोजीशन हम काबिल करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में। बट क्या हम अपने लाइफ को जो है एनलाइटन करते हैं? क्या हम अपने लाइफ को जो है इन सभी चीजों से बाहर निकाल के जागरूक अवस्था में आने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। तो पहले चैप्टर का जो मुख्य सारांश यह है कि हमको अपने आत्मा को जानना है, अपने आत्मा को जान के सेल्फ रियलाइजेशन करना है और वहां से बाहर निकल के हमको जागरूक अवस्था में आने की कोशिश करना है। सेकंड चैप्टर ये हमें शिक्षा देता है कि हमारे स्टेजेस ऑफ पाथ कितने हैं, कितने ऐसे रास्ते हैं जिसके ऊपर चल के हम हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जी इसमें सेकंड चैप्टर जो है वो दिनाकरण जी बोलेंगे, उसके बाद आपको कहना है। क्या बोल रहे सर? दिनाकरण जी अभी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपका वापस आएगा नंबर। ठीक है सर, नो सर। दिनाकरण जी प्लीज वीडियो ऑन कीजिए सर। हेलो दिनाकरण जी। हाँ हाँ सर, प्लीज गो अहेड विथ योर चैप्टर 2। थैंक यू। सर अनम्यूट। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। Thank you, my fellow speakers. The second part is also very important, like the first part containing 5 chapters. Here also Radhaji quotes Viveka Chudamani, the crest jewel of wisdom of Adi Shankaracharya, verse 11, and says, karma is the purification of the mind. She clearly points out the difference between the Mimamsaka school in India and the Vedanta school of philosophy. The former gives importance to ceremonies and its teachings, while the latter rejects all such activities as futile. They insist that ceremonies have value if they bring about purity of the mind. Bhagavad Gita also says that not for an instant it is possible for one to remain actionless in this world of manifestation. Understood in this sense, the very purpose of our life in this physical world is to learn how to be pure, which means how to live in the world and yet not be attracted by it or attached to it. The mind cannot awaken into a state of understanding unless it is pure, for wisdom and purity are two sides of the same coin. An impure mind cannot be spiritually awake, for self-centeredness breeds illusion. Observing the very nature of human mind, she says, indifference is common condition of the mind. She explains the teaching of Lord Buddha. Cease to do evil and learn to do good. Ceasing to do evil may amount only to self-satisfied harmlessness
There is by no means an absence of selfishness, but maybe a smug of self-contentment which ignores the rest of life. When the self seeks to protect itself, to feel safe, there is indifference and inertia, which is called as tamasic. It acts as a screen which obstructs the awareness of truth. Throughout her life, Radhaji was engaged in lectures, study camps, meeting different people from all over the globe. She answered the questions raised by people on spirituality, meditation, different schools of philosophy such as Vedantis, Buddhists, met people from every walk of life, such as great politicians, eminent juries, holy people like His Holiness Dalai Lama, J. Krishnamurti, Thich Nhat Hanh, etc. He was also comfortable with very ordinary people, government officials, housewives, artists, and so on. She poses a question raised by people everywhere. What sadhana or practice can best lead to spiritual progress? According to Radhaji, such a question implies the existence of compartments in the questioner's mind. He or she clearly thinks of the means to realization as a special kind of action apart from the other actions of his life. This does not mean that one should not devote certain moments of the day to silent contemplation, but it is more important that one should live purely and that all one's actions should be part of a way of life without divisions. A pilgrim walks along a certain path in order to reach a sacred mountain, but the mountain is not the result of the path. The mountain simply is. That's all. We must open our eyes in order to see the light, but the light is not the result of the opening of the eyes. Similarly, the state of prajna or enlightenment is not the result of anything, for it is not in the sphere of results at all. In a state of absolute unity, of oneness of being, the opposites do not exist and there is no relationship. In a state where there is a realization of unity, there are neither good relationship nor bad. As long as one is in the world of relativity, good relationships are better than bad. But what is valid in this dimension is not so in the state that is called nirvana. In certain Buddhist scriptures, it is said nirvana is a state of bliss. But in nirvana, there is no sensation. Only a person who transcends the enjoyment of sensation can achieve nirvana, she clarifies. In her lectures, she always warned the listeners from wrong notions regarding the masters of the wisdom. She says, our conception of the life of a master or an enlightened person will be a mistaken one. If we think of it as similar to our own, for he lives in a dimension of which we can know nothing, it may be helpful to meditate on the nature of the masters or on their wisdom and compassion. But we must never fall into the mistake of thinking that these mental concepts correspond to the truth about them because the truth belongs to an entirely different sphere. The true individuality of the enlightened person cannot be conceived as a quality. It is, as it were, a space in universal being. It transcends the duality, which we know, both the good and the bad. If we realize that internal purity can come about through our every action, whatever that action is at every moment of our life, then there is an action which does not seek for results. If action takes place without seeking a result, that is nishkama karma. That in itself is a state of purity. Sometimes people opine that theosophy is not practical. But she says the principles of theosophy are eminently practical. It is for us to discover this for ourselves and learn from them how to direct our lives and to live rightly. Theosophy may be for some of purely academic interest, in which case it is valueless. Or it can inspire us to bring about the state of internal purity more quickly. Here we have to reflect on Radhaji's words. In order to benefit the world, theosophy should be practical as well as spiritual. It must be philosophy which transforms every activity in life, every area of our lives. In 6th chapter, Masters and Gurus,
is very relevant today. Theosophical literature speaks about the unfolding of consciousness through the evolution of forms and organisms. Man, as he is today, is not the end of the process of evolution. Theosophical writings declares that there is further unfoldment before him. In the Upanishad, Brahman is described as absolute universal consciousness, perfect peace and beauty. In a liberated man or master, these virtues, which are the very nature of consciousness, have flowered into perfection as his consciousness has blossomed fully in perfect measure, revealing powers as it in latent in the average man. So he is perfect in wisdom, compassion, love, and selfless purity. Purity means the total absence of the sense of a separate self. Perfect love implies no choosing, not giving love in return for something else. Often questions are asked, why do not the masters meet us? If we invite them, will they come? But they may not act according to our ideas or in any way that we may imagine. However, when there are people who are ready, the wise ones afford opportunities for contact, guidance, and teaching. The old dictum is, the master appears when the disciple is ready. The Sanskrit word guru means one who dispels the darkness. Viveka Chudamani makes it clear that one cannot have a substitute to perform the actions which will bring bodha or awakening to oneself. But people often think that they do not have to do anything. They have only to attach themselves to a so-called guru, touch his feet, or sit in front of him, and then he'll take over the responsibility. This is only a convenient philosophy, for it follows people to go on with their worldly life of ambition, jealousy, money-making, desire for power, and so on. He remains as the three great truths of theosophy. Each man is his own absolute lawgiver, the dispenser of glory or gloom to himself, the decreer of his life, his reward, his punishment. The Mahatma letters clearly states that only a person's evolving spirituality can draw him near to the master. We must approach the masters unconditionally, free from worldly and prudential considerations. But we do not want to go unconditionally. We want to keep our comforts, pleasures, and ambitions, and at the same time reach the world of the holy ones. The master never tells what we must believe, because believing has no meaning. He wants the disciples' consciousness to awaken to the truth, which is something different. Belief creates rigidity and fanaticism and is productive to harm, not good. In the Mahatma letters, it is pointed out that religion is often used as a crutch, but people must learn to be self-reliant and free. The importance of vichara, inquiry, is emphasized in Vedanta. So there is a difference between those who are usually considered as gurus, the masters as they are described in theosophical literature. Personal worship, self-glorification, telling other people what to do, making them dependent, teaching them beliefs, imposing ideas upon them, collecting money, and becoming rich with the luxuries of life, that is part of the present-day gurudom. The 7th chapter deals with the subject freedom from sorrow. Buddha spoke of right perception as the first step in the Eightfold Path, to be able to see things as they are, not through colored glasses of some kind, is one of the problems, perhaps the most important problem with which we are faced. Radha S says, people often seek enlightenment, but the real person for finding enlightenment should be an altruistic sympathy and compassion for all who suffer. There's a beautiful saying that compassion is the mother of all Buddhas. Buddha said, Trishna, or craving, is the cause of sorrow. Thirst exists not only for objects like money, jewelry, luxury cars, etc., but we may have a craving for other things also, such as spiritual advancement. When we think that we have conquered this thirst in one shape, it arises in another form. We should have an urgency to change and to see the necessity of it is the first step. Thirst also exists in subtle forms of a desire for domination, of aggressiveness, or self-promotion in various forms. Many people depend upon the mercy of others, such as
They become angry when the other is angry. If somebody insults, we feel humiliated. Such dependencies are shackled to us. We are continuously clinging to the impermanence such as physical body, material objects, name, fame, ideas, and so on. We are capable of learning through conscious effort and need not undergo suffering. This is the difference between the man who has set his foot on the path and the man of the world. The 8th chapter is entitled The Way of the Real. We are all familiar with the scriptural saying, Asatoma Sadghamaya, lead me from the unreal to the real. The question is, what is real? Reading volumes of books, discussing on it, will never lead us to the real. A direct, non-theoretical approach is necessary to know the truth about the matter. Radhaji says, in our daily life, we feel the contradiction that one hand we find things as real, the world around us with the phenomena, the trees, the people, and other objects, various incidents which take place also, what we call ourselves, our bodies, thoughts and emotions. But sensitive people, on the other hand, feel that there is something other than this concrete reality which holds us captive all the time. We never seek the greater reality. Everything of which we are aware, what we perceive with our senses, feel or think, as an element of reality. But there are unreal things as stated in the Indian philosophy, such as son of barren woman, Vandhya Putran. A dream is real to us until we are awakened from it. A great mountain at far distance may look very small to our physical eyes, but the reality is the other. The Upanishads too, and many other scriptures mentioned is one reality. Thy reaches not there, nor speech, nor mind. It cannot be described in words. This is from Kena Upanishad. Jainism says that what can be described or thought of is not the totality. The totality can never be caught in words. The reality cannot become an object of thought, be held as an image of or concept, because it is beyond duality that it implies when there is an object of thought different from the subject. Radhaji challenges statements like, oh yes, we know that life is one. We know that there is unity and not diversity. We believe in brotherhood. We are not talking about such noise. Theoretical knowledge of these things make no radical difference to our lives, as can be seen by experience. As the Hindu philosophy says that listening to a truth, Shravana, must be followed by reflection, Manana, and a deep contemplation of it, Nididhyasa. Those who are ready for spiritual wisdom are those who have found out for themselves what is relatively unreal and have set it aside as a result of their own perception, not because they have been told to abstain from certain things. The chapter Towards a New Perspective is an eye-opener to all of us. What we call the world comprises many attractions. There is attraction of success, of money, of power, of pleasures. The short-sightedness of a man cripples his vision and incapacitates his mind. The problem is how to live in a life in peace and harmony with other people, with nature, with oneself, and to let all that is best within unfold into a state of beauty and perfection. Radhaji says that the present day world abounds in symptoms of short-sightedness. Spiritualization is one form. The mind moves in a groove, it becomes indifferent to other issues. The chemist who produces deadly chemicals is totally unaware of the dangers of that chemical which may pollute the environment and harm the ecosystem. A nuclear scientist is only concerned with the manufacturing of a bomb and not worried whether the cunning politician uses it for the destruction of another nation. Human mind is also a slave to compartmentalization. According to religious ceremonies, for a part of the day, listening a discourse by a so-called guru, even social service is a form of escape. The person who is very kind to animals may be very cruel to his subordinates and vice versa. Some people are very cordial and generous in their peer group, but totally indifferent to other people of the society. The craving for the modern
and a despise towards the old is also common. As the great poet Kalidasa said, everything which is old is not necessarily good, nor is everything which is modern. The feeling of insecurity is the reason why we identify as a Muslim, Jew, an Indian, or something else. The first object of the Theosophical Society speaks of forming a nucleus of universal brotherhood of humanity without distinction of caste, creed, sex, or color. To be a Theosophist is to be free to look intelligently, to find the state within oneself which is purity and austerity, in a stage of internal simplicity of sannyasa, austerity that one can discover the wisdom to resolve the problems of humanity and make the world a better place. There is an urgency for bringing about such a change. Radhaji is no more with us in her physical body, but she left a great theosophical tradition to us, which will always stand as a lighthouse in the roaring sea of worldly life. Thank you. Right on time, Dinakaran ji. Nandkumar ji, please go ahead with your Marathi version. Thank you. Yes. राधाजी आदि शंकराचार्यांच्या विवेक चूडामणी याचा उल्लेख करतात आणि म्हणतात की कर्म हे मनाच्या शुद्धीसाठी आहे. भारतात दोन प्रकारच्या फिलॉसॉफी आहेत. पहिली मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसॉफी आणि दुसरी वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसॉफी. त्यांनी यांच्यातील फरकही त्यांनी स्पष्टपणे मांडला. पहिल्या स्कूलचे फिलॉसॉफी समारंभ आणि त्याचे अर्थ यांना महत्व देतात. तर दुसरी वेदांत फिलॉसॉफी असे सर्व उपक्रम निरर्थक म्हणून मानतात आणि ते नाकारतात. आणि ते असे आवर्जून सांगतात की मनाची शुद्धता असल्यावरच समारंभांना महत्व असते. मन शुद्ध असल्याखेरीज समजूतदार स्थिती जागृत होऊ शकत नाही. कारण शहाणपण आणि शुद्धता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अशुद्ध मन आध्यात्मिकरित्या जागृत असू शकत नाही, कारण आत्मकेंद्रितपणा भ्रम निर्माण करतो. मानवी मनाच्या स्वभावाचे निरीक्षण करून त्या म्हणतात उदासीनता ही मनाची सामान्य स्थिती आहे. आणि भगवान बुद्धांनी सुद्धा अशी शिकवण त्यांची स्पष्ट करते की वाईट करणे थांबवा आणि चांगले करायला शिका. पवित्र पर्वतावर जाण्यासाठी यात्रेकरू एका विशिष्ट मार्गाने चालतात, परंतु पर्वत हा मार्गाचा परिणाम नाही. डोंगर फक्त एवढेच आहे. प्रकाश पाहण्यासाठी आपण आपले डोळे उघडे ठेवले पाहिजेत, परंतु प्रकाश डोळे उघडल्याचा परिणाम नाही. त्याचप्रमाणे प्रज्ञा किंवा आत्मज्ञान ही स्थिती कशाचाही परिणाम नाही, कारण ती परिणामांच्या क्षेत्रात अजिबात नाही. निरपेक्ष एकात्मतेच्या अस्तित्वाच्या एकतेच्या स्थितीत किंवा विरोधी अस्तित्वात नसतात आणि कोणतेही नाते नसते. ज्या राज्यात एकात्मतेचा प्रत्यय येतो तिथे ना चांगले संबंध असतात ना वाईट. जोपर्यंत या सापेक्षतेच्या जगात आहेत तोपर्यंत चांगले वाईटापेक्षा चांगले असतात. परंतु या परिणामात जे वैद्य आहे ते निर्माण म्हटल्या जाणाऱ्या अवस्थेत नाही. काही बौद्ध धर्मग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की निर्वाण ही आनंदाची अवस्था आहे, परंतु निर्वाणात कोणतीही संवेदना नसते. केवळ संवेदनेच्या आनंदाच्या पलीकडे जाणारी व्यक्तीच निर्वाण प्राप्त करू शकते. राधाजी असेही स्पष्ट करतात की ज्ञानी व्यक्तीचे खरे व्यक्तिमत्व असू शकत नाही. लोकांनी स्वावलंबी आणि मुक्त व्हायला शिकलं पाहिजे. वेदांतात विचार तपाचे महत्व सांगितलेले. त्यामुळे थिओसॉफिकल साहित्यात वर्णन केल्याप्रमाणे
ज्यांना सामान्यतः गुरु आणि मास्टर मानले जाते त्यांच्यात फरक आहे. 7वा अध्याय दुःखापासून मुक्ती या विषयाशी निगडीत आहे. बुद्धांनी 8 पट मार्गातील पहिली पायरी म्हणून योग्य आकलनासाठी सक्षम होण्याबद्दल सांगितले. एखाद्या प्रकारच्या रंगीत चष्म्यातून नव्हे तर गोष्टी जशा आहेत तशा पाहणे ही अनेक समस्यांपैकी एक समस्या, कदाचित ही सर्वात महत्वाची समस्या आहे जी आपल्या जीवनात नेहमी निर्माण होते. राधाजी म्हणतात, लोक सहसा ज्ञानाचा शोध घेतात, परंतु आत्मज्ञान शोधण्याचे खरे कारण म्हणजे दुःख सहन करणाऱ्या सर्वांबद्दल परोपकारी सहानुभूती आणि करुणा असणे आवश्यक आहे. करुणा ही सर्व बुद्धांची जननी आहे, अशी एक सुंदर म्हण आहे. बुद्ध म्हणाले, तृष्णा ही दुःखाचे कारण आहे. तहान केवळ पैसा, दागिने, आलिशान कार इत्यादी वस्तूंचीच नाही, तर आपल्याला इतर गोष्टींची सुद्धा इच्छा असू शकते, जसे की आध्यात्मिक उन्नती. जेव्हा आपण विचार करतो की आपण ही तहान एका आकारात जिंकलेली आहे, एका पद्धतीने जिंकलेली आहे, तेव्हा ती दुसऱ्या स्वरूपात उद्भवते. पुन्हा आपल्याला बदलण्याची निकड असली पाहिजे आणि त्याची आवश्यकता पाहणे ही पहिली पायरी आहे. 8व्या प्रकरणाचे शीर्षक द वे ऑफ द रियल, वास्तविक मार्ग आहे, हे आहे. असतोमा सद्गर्मय, म्हणजे अवास्तविकतेकडून वास्तविकतेकडे घेऊन जा. या शास्त्र वचनाशी आपण सर्व परिचित आहोतच. पुस्तकांचे खंड वाचणे, त्यावर चर्चा केल्याने आपण कधीही वास्तवाकडे जाणार नाही किंवा ते आपल्याला वास्तवाकडे कधी नेऊ शकणार नाही. राधाजी म्हणतात, आपल्याला माहित आहे की जीवन एक आहे. आपल्यास माहित आहे की एकता आहे आणि विविधता नाही. आम्ही बंधुत्वावर विश्वास ठेवतो. अशा जाणीवेबद्दल आपण बोलत नाही. या गोष्टींचा सैद्धांतिक ज्ञानाने आपल्या जीवनात कोणताही आमूलाग्र फरक पडत नाही, असे अनुभवाने दिसून येते. हिंदू तत्वज्ञान सांगते की सत्य म्हणजे श्रवण म्हणजे ऐकण्यासाठी आणि चिंतन म्हणजे मनन आणि त्याचे सखोल चिंतन निधिध्यास केले पाहिजे. जे आध्यात्मिक शहाणपणासाठी तयार झाले आहेत ते असे आहेत की ज्यांनी स्वतःसाठी काय तुलनेने अवास्तव आहे हे शोधून काढले पाहिजे आणि ते त्यांनीच स्वतःच्या आकलनाचा परिणाम म्हणून बाजूला ठेवले आहे. त्यांना काही गोष्टीपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे, म्हणून असं नाही आहे. अध्याय नवीन आकलनाच्या दिशेने म्हणजे टुवर्ड्स ए न्यू परसेप्ट, हा पुढचा अध्याय. हा आपल्या सर्वांसाठी डोळे उघडणारा अध्याय. आपण ज्याला जग म्हणतो त्यात अनेक आकर्षणे असतात. यशाचे, पैशाचे, शक्तीचे आणि सुखांचे आकर्षण असते. माणसाची कमी दृष्टी त्याच्या दृष्टीला अपंग बनवते आणि त्याचे मन अक्षम करते. इतर लोकांसोबत शांततेत आणि सुसंवादाने कसे जगावे ही एक समस्या आहे. स्वतःसोबत निसर्गासह आणि सर्वोत्कृष्ट जे काही आहे ते सौंदर्य आणि परिपूर्णतेच्या अवस्थेत उलगडू द्या. राधाजी म्हणतात की सध्याचे जग अदूरदृष्टीच्या लक्षणांनी भरलेले आहे. स्पेशलायझेशन हा एक प्रकार आहे. जेव्हा मन एका खोबणीत फिरते तेव्हा ते इतर समस्याबद्दल सुद्धा उदासीन होते. मानवी मन देखील विभागीकरणाचे गुलामच आहे. दिवसाचा काही भाग धार्मिक समारंभांना उपस्थित राहणे, तथाकथित गुरूंचे प्रवचन ऐकणे आदी समाजसेवा हाही एक प्रकारे सुटकेचा मार्ग आहे. जी व्यक्ती प्राण्यांवर खूप दयाळू असते ती त्याच्या अधीनस्थांशी खूप क्रूर असू शकते आणि उलट काही लोक त्यांच्या समवयस्क गटात खूप सौहार्दपूर्ण आणि उदार असतात, परंतु समाजातील इतर लोकांबद्दल पूर्णपणे उदासीन असतात.
आधुनिकची लालसा आणि जुन्यांकडे तिरस्कार ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. महान कवी कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे जे काही जुने आहे हाँ सर, कहिए आगे. हा आ रहा है. जे काही जुने आहे ते चांगले आहे असे नाही, किंवा जे काही आधुनिक आहे ते सर्व काही चांगले नाही. असुरक्षिततेची भावना हेच कारण आहे की आपण मुस्लिम, ज्यू, भारतीय किंवा दुसरे काहीतरी म्हणून ओळखतो. थिओसॉफिकल सोसायटीचा पहिला उद्देश जात, पंथ, लिंग किंवा रंगाचा भेद न करता मानवतेच्या सार्वभौमिक बंधुत्वाचा केंद्र तयार करण्याविषयी बोलतो. आता राधाजी भौतिक शरीराने आता आपल्या सोबत नाही, परंतु त्यांनी आपल्यासाठी एक महान ब्रह्मज्ञान परंपरा सोडली आहे, जी सांसारिक जीवनाच्या गर्जना करणाऱ्या समुद्रात नेहमी प्रकाशघर म्हणजे लाईट हाऊस म्हणून उभी राहील. अशा प्रकारे आज आपण राधाजींना नो पार्ट टू गो ह्या त्यांच्या पुस्तकावर चर्चा करून त्यांना एक प्रकारे आदरांजली दिलेली आहे. आता आजचा हा पार्ट 2 संपलेला आहे. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद नंदकुमार राव जी. संजय जी, आप अपना पार्ट 2 अभी आरंभ कर सकते हैं, फिनिश करें. थैंक यू. सर अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट. हाँ, हमारे कर्म जो है वही हमारे माइंड के प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जा सकते हैं. दो तरह के स्कूल है, एक मीमांसा स्कूल है, एक वेदांता. मीमांसा स्कूल जो है समारोह, सेरेमनी और इसको बहुत प्राधान्य देता है. हाउएवर वेदांता जो स्कूल है वो आध्यात्मिकता और हम कैसे अवेकन हो सकते हैं इसके तरफ हमें लेके जाता है, जागरूकता की तरह हमें लेके जाता है. तो राधा जी ने काफी इसका अभ्यास किया है, मीटिंग्स किए हैं, तो अलग अलग लोगों से मिली है, ज्ञानी, राजनेता और इवन सामान्य लोगों से भी वो मिली है, और उन्होंने कोशिश किया है कि जो भी नॉलेज ले सकते हैं वो नॉलेज लेने की उन्होंने कोशिश की है. जैसे कि एक भावी भक्त होता है, वो अपने भगवान को पाने के लिए एक रास्ते पे निकल पड़ता है, वो उस धार्मिक प्रथाओं के ब्रह्मांड में उसमें जो फंस जाता है. लेकिन हमें कोशिश करना है कि जो हम उससे निकल कर जो है एक सच्चे पाथ पे हम चल पड़े. बहुत सारी गलत धारणाएं दी हुई है. तो मास्टर ऑफ विजडम में ये दिया है कि हम अपनी शुद्ध बुद्धि की चेतना कैसे जागरूक कर सकते हैं. तो राधा जी ने चेतावनी भी दी है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमने करुणा में रहना चाहिए, हमें जो है ब्रह्म विद्या की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए. जो थियोसॉफी को बोला गया है कि ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन थियोसॉफी हमको जो है व्यवहारिकता की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करते हैं. तो 6वां चैप्टर जो है उसमें मास्टर्स और गुरु के बारे में जानकारी दी है. जो कि हमको जो है बुद्धि, करुणा, प्रेम और निस्वार्थ शुद्धता की तरफ ले जाने की कोशिश करता है हमें. मास्टर तब आते हैं जब जो शिष्य जो है तैयार है कुछ लेने के लिए, तो मास्टर जो है आ जाते हैं. हमें जो है ये जेलसी है, मनी सीकिंग है, डिजायर्स है, इन चीजों से बाहर निकल के जो है हमें अपने आप को जो है सत्य की तरफ लेके जाना है हमें. हमको
बहुत तरह के बिलीफ्स है जो कि हमको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो हमें बेसिकली खुद के ग्लोरिफिकेशन की तरफ हमें लेके जाना है। 7वां चैप्टर जो है हमें बताता है कि हमको दुखों की तरफ से कैसे बाहर निकलना है, हमें दुखों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे संकट आते हैं, वो आते, अगर हम जागरूक हैं तो हम इन संकटों से बाहर निकल सकते हैं। 8वें चैप्टर में जो है ये दिया है कि द वे ऑफ रियल, क्या है सत्यता, क्या है उसकी तरफ हमें जाने की कोशिश करना है। बेसिकली हमें जो राधा जी ने बता दिया है कि वो चैलेंज भी करती है कि क्या हमें भाईचारे की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम भाईचारे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं। और एक हमें नए विचारधारा की तरफ भी जाना चाहिए, जो कि हमें जो किसी चीज से अट्रैक्ट न करें और हमें आगे लेके जाने की कोशिश करता है। हमारा जो माइंड है वो हमारा स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। जैसे कि जो केमिस्ट है या जो साइंटिस्ट होता है वो प्रयोग करके बॉम्ब बनाता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होने वाले हैं उसको चिंता नहीं होती है। तो एक जो राधा जी ने जो हमें संदेश दिया है इन 9 चैप्टर से, हर एक चैप्टर में अलग अलग ये दिया है, और आखिरी में उन्होंने बताया कि हमें जो है आंतरिक सुंदरता और सादगी की तरफ निकलना है। जो हम जो भी ज्ञान आत्मसात करने हैं, अपने आप को आत्मा और इसको शुद्ध कर रहे, प्योर कर रहे हैं, हमको एकदम सादगी भरी जिंदगी और हमारा जो आंतरिक सुंदरता, सादगी, उसके तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच संजय जी। और अब मैं वापस आमंत्रित करता हूँ तीनों स्पीकर्स को कि वे कुछ और ऐड करना चाहते हो जो समय की सीमा थी उसके अलावा, तो आप अभी ऐड कर सकते हैं। और उसी तरह से ओपन टू ऑल, अगर वो भी कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। यस सर, करण जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yes, I don't want to add anything because Radhaji's presentation is wonderful. So I would like to thank all the fellow speakers, translators. They were able to translate it within a short time. I knew I couldn't send it. Sometimes I couldn't send it in right time. So they were able to do it in the right way. They did good justice to translation. I would like to thank Sanjay, Brother Sanjay and NANDKUMAR for their translation. I would like to translate TARAL and all the listeners. Thank you once again. Thank you, Dinakaran ji, and really hats off to both of them that in a short time और बहुत ही अच्छा किया, काफी बढ़िया किया और सारी चीजें समझ में भी आई। हाँ जी, कोई ऐड करना चाहता है? हर्षवर्धन जी, शिंदे जी, डॉक्टर सुषमा जी, तो वे अभी कह सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से वे सुन नहीं पा रहे हैं। शिंदे जी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। लेकिन आवाज, मेरी आवाज आती है? आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। अभी वापस चली गई। नहीं, वो शायद ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, कनेक्शन उनका शायद फॉल्ट है। आ गई आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है So I must thank you for always disconnecting
नहीं गई सर, गई, आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से लाइन आपकी वीक है, तो शायद आपको केवल ऑडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। वही ऑडियो से काम चलाना। ओके, हिंदी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो लोग फिर समापन की ओर चले। किसी को और कुछ भी ऐड नहीं करना है? हर बार हमें सुषमा जी आपके आशीर्वचन से हम विदा लेते हैं, अगर आप सुन रही हो तो कुछ कहें। माधवी जी हैं, माधवी शर्मा जी हैं, दुबल जी हैं, सनत कुमार जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं। नहीं, शिंदे साहब का तो लिंक में कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, तो अगर किसी को भी ऐड ना करना हो तो आप सबकी इजाजत से हम लोग समापन की ओर चलते हैं। अतुल भाई। ઓકે, કેશવરબેન આપણને શિવોમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम